Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर. स्टार्ट कर लें, वेट कर. कितने लोग आना है और? कल एग्जाम कैसे लिखे ये बोलो पहले. हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर. कल वेक्टर्स के पेपर में 18 क्वेश्चंस थे खाली, बाकी के पूरे आउट ऑफ थे. तो 18 क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस तो करने आए नहीं है. आए सर. वेक्टर्स के आए पूरे. छोटे छोटे क्वेश्चंस ही से, ज्यादा बड़े कुछ भी नहीं थे. हाँ हाँ सर, जबरदस्त थे वो, अच्छे वाले आगे. अच्छा, वो बाकी के वेक्टर्स के वो क्या बोलते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के एरर्स के थे, वो तो छोड़ो जब हो. लेकिन वेक्टर्स के क्वेश्चंस में अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो आप लोग मेरे पूछ सकते हैं. आई विल हेल्प यू आउट इन दैट वन. ओके सर. बड़ा लास्ट टॉपिक वी हैव डन बेटा. लास्ट टॉपिक क्या था अपना, देखो सर आप जल्दी से. प्रॉब्लम्स दिए थे सर आप प्रॉब्लम्स दिए थे थोड़े करने को, मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन के, तो वो कर लिए सर, आगे पूरे आगे. ओके चलो, वेरी गुड. चलो लेट अस ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक बेटा. कॉन्सेप्ट ऑफ यूर बोर्ड शेयर हो रहा है बेटा. यस सर, हो रहा. चलो keep the next heading beta. Concept of relative motion. Concept of your relative motion in 1D. So let us try to talk about only the 1D motion. So we are talking about the relative motion in your 1D. What do you mean by 1D beta? Only in the straight line motion. Only in the straight line motion part of relation. मान के चलो, if I am talking about, like say for example, first situation, let's say for example, this is an horizontal surface. Say for example, this is your horizontal surface. Okay, this horizontal surface, we are having two bodies. Like say for example, we are having one body here right now. We are having one body here, right? Okay, these two bodies are moving with two different velocities. Let's say for example, this is moving with velocity of your VA. Okay, this one is moving with a velocity, मान के चलो VA, and this body is moving with a velocity, say for example VB. Clear है बेटा? So both the bodies are moving with the two different velocities. The first one is moving with velocity VA, the other one is moving with velocity of your A part. मान के चलो from here right now, from this position, this is at a distance of your XA. That means this distance is, say for example, this is a body B and this one is your body A. The position of this body from this distance is, say for example, XB. ठीक है? Is that clear? And the body's acceleration मान के चलो in the front direction ये, this is the acceleration of your A and this is the acceleration of your B. All the three parameters are देखो जो भी हम लोग position, velocity, acceleration. Okay? So if I am talking about position of your B with respect to your A, तो कैसे लिखोगे? Position of your B with respect to the ground minus position of your A with respect to the ground. Ground always respect मान के चलते हैं basically. तो ये हो गया x of your B minus x of your A. यानी position of your B with respect to your A will be equal to how much बेटा? XB minus of your XA. इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग?
relative position of the B with respect to your A. This is known as a what? Relative position of your, this one is known as of your relative position, relative position of B with respect to A. Clear hai? Yes, sir. Okay, or else you can even say displacement beta, relative displacement of the B with respect to A भी बोल सकते हो इसको, relative position or relative displacement with respect to B with respect to A. If I differentiate this one with respect to time, dx by dt will give me what? Velocity. So ये हो गया मेरा first point. The same way second one. Next one is about your relative velocity, relative velocity of B with respect to A. कैसे कहोगे बेटा? Relative velocity of your B with respect to your A will equal to velocity of the B minus velocity of your A. Clear? With respect to ground Yes, लिखेंगे, sir. ground तो anyhow it will be your rest. That's not a problem. In the same way, if I am talking about your relative acceleration, if I am talking about your relative acceleration of B with respect to your A, तो कैसे लिखेंगे? Relative velocity acceleration of B with respect to your A will be equal to your acceleration of the B minus acceleration of your A. Clear hai? Yes, sir. Okay. So these are your x coordinate of your A with respect to B, and this is the velocity of the B with your deflection. And next one is nothing but x is nothing but x is nothing but position or displacement of the body in the straight line. सर लैग हो B रहा minus of सर आपकी वॉइस और स्क्रीन लैग हो रहा है। everyone. Am I audible? सर वॉइस लैग हो रही सर वॉइस लैग हो रहा एक अभी बेटा Yes, sir. आ रही सर ठीक है चलो सो ये क्लियर है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन ए का पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन एक्स ए पोजीशन ऑफ द बी फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्स बी इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रिलेटिव पोजीशन बोलते हैं बेटा relative position or relative displacement of B with respect to A मतलब xb minus of your xa, xb minus of your xa. If I differentiate this one with respect to time, we'll get the velocity. So velocity of B with respect to A means velocity of B minus velocity of your A. The same way relative acceleration of B with respect to A मतलब acceleration of B with respect to A is nothing but acceleration of the B minus acceleration of your A. Is this three formulas clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. See this, Yes, sir. see this question बेटा कोई डाउट है किसी को नहीं सर चलो see this one beta this is say for example a horizontal road just listen the question I'm not writing it so try to understand here right now say for example here there is a car okay and here there is another car okay something like this and this one is your car B and this one is your car A this one is moving with a velocity say for example 20 meter per second and this one is moving in this direction with your 15 meter per second or 10 meter per second भी ले सकते हो उसमें कोई problem नहीं है isn't it so now we need to calculate find relative velocity find relative velocity of B with respect to A find the relative velocity of the B with respect to your A यहाँ पर देखो बेटा sign convention what I am using here see the sign convention if I am moving in this direction we take it as positive
If I am moving in the opposite direction, we take it as of your negative. Negative. Okay, so this one is velocity of your A with respect to ground is given as 15 meter per second. In which direction it is moving better? Negative. So this will be your negative. Velocity of the B with respect to ground is equals to 20 meter per second. Which direction? Positive x-axis. So it is positive. So now what we need? Velocity of the B with respect to your A. That means this is the velocity of the B with respect to ground minus velocity of your A with respect to the ground. So that is equals to velocity of the B with respect to ground is how much better? 20. So ये हो गया 20 minus velocity of your A with respect to ground is negative. minus 15. Equal to Minus 15. 15. So this will become for me how much? Minus 35. minus plus. So this will be your 35. 35 meter per second. 35 meter per second. Is it clear for everyone? Yes, sir. Chalo, very good. Next application beta. Example number 2. ठीक है? See for example, मान के चलो, we have got a train. A train is traveling. A train is traveling with a speed. A train is traveling with a speed of 15 meter per second, and a man is walking, inside the train at 1 meter per second with respect to train in the direction of train. जैसा कभी हम लोग ट्रेन में बैठ के मूव होते हैं ना सामने पीछे, वही कंडीशन है. We need to calculate right now here. Find the velocity of man with respect to observer on ground. So read the question carefully once. We got a train. A train is moving with a speed of 15 meter per second, and a man is walking inside the train at a 1 meter per second. That means the velocity of the man is with respect to your train. Velocity of the man is with respect to the train. He's asking to, can I find out right now for me what? Velocity of the man with respect to what beta? With respect to the ground. Ground. Velocity of the man with respect to the ground. ये पूछ रहा है ना? Yes, sir. See. Now see the condition right now. Can anyone give me the answer for this one? मान के चलो ये मेरे पास ट्रेन है, and this train is moving on this track. कुछ भी some track है, isn't it? So this train is moving with this velocity. This is your track, and this is train है मान के चलो. So velocity of the train with respect to the ground कितनी है बेटा? 15 meter per second. And a man is standing inside here right now. इसके अंदर आप ठहरे हो मान के चलो. You're moving in this direction. So velocity of the man with respect to the train is equals to how much beta? 1 meter 1 meter per second. 1 meter per second. Now we know that velocity of man with respect to train मतलब कैसे लिखोगे? Velocity of man with respect to ground minus velocity of train with respect to the ground. Both of them are in the same direction, तो sign convention दोनों का भी positive. Velocity of man with respect to train आ गया, वो कितना है मेरे पास? 1. That is equals to velocity of man with respect to ground निकालना है मेरे को, minus velocity of train with respect to ground is how much for me? 15. So velocity of man with respect to ground कितना निकला? ये minus 15 इधर चले जाएगा तो plus, so it will be your 16 meter per second. Everyone got it बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Clear है? Yes, sir. थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चन का. मान के चलो right now we got two trains. Like say one is 110 meter and another one is of your 90 meter long. Another one is your 90 meter long. Are running in opposite directions. Are running in your opposite directions. With velocities 36 kilometer per hour and 54 kilometer per hour. First stop. Find the time taken
by the two trains. Find the time taken by the two trains to completely cross each other. Completely cross each other. डायग्राम ड्रॉ कर लो अपने हिसाब से, आराम से निकल जाएगा, उसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है. But the only thing is convert the question into the diagram. See the question. We got two trains of 110 meter and 90 meter long and are running in the opposite direction. मान के चलो ये यहाँ पर एक ट्रेन है, ये वाली, ये है, and this is moving with a velocity 1. And there is another train right now here. Okay. This is your another train and this is moving in the opposite direction. This is your B. Two trains are 110. So this one is of your 110 meter and this one is, say, for example, of your 90 meter. In opposite directions with a velocity of your, one is moving with a velocity of your, how much for me? 36. Where is that one? 36 kilometer. So this one is your 36 into 5 by 18. So कितना आया बेटा? 8 हाँ? seconds. 10. 10 आएगा ना? So this one is 10 meter per second. This one is how much for me? This is moving with what velocity? 54. So this one is nothing but 54 into your 5 by 18 meters में convert करना ना, तो ये कितना आ रहा है देखो? 15. 15 meter per second. आ गया? Clear है? Yes, sir. Isn't Sir. it? So this is A, this Yes, is your sir. B. So this is the velocity of your A and this is the velocity of your B. Velocity of your A with respect to ground. I'll write the data given for me. Velocity of your A with respect to ground is equals to how much for me? 10 meter per second. Positive ki negative? Positive. Velocity of the B with respect to ground is how much for me? 15. Positive ki negative? Negative. Negative. Very good. 15 meter per second. Isn't it? Now, what is the velocity of your A with respect to B? That means this is the velocity of your A minus velocity of your Velocity B. of This one is 10 minus, this one is minus 15, minus plus, so this will be equal to 25 meter per second. per second. So this is the velocity of this one. Now what is asking? Time taken na beta? Time taken कैसे Sir. निकालोगे आप? Time taken is equals to how much for me? T is equals to your total distance between them. Distance by your velocity because it is moving with uniform path deflection. पहले उन दोनों के relative displacement बताओ. Relative position of A with respect to B is equals to XA minus of XB. XA Yes, कितना sir. है बेटा? XA is given 110. as 110 minus another one is minus 90. 90. Minus 90 ना बेटा? Opposite direction में. Yes, sir. Yes, sir. This one is in this direction. This one is in opposite direction. तो कितना हुआ? Minus से plus. तो कितना होगा ये? 190 meter. 200 meters. Okay, so time will be equal to how much for me? S is equals to your, S is equals to your, or else you can write here right now, x of your AB is equals to velocity of your A with respect to B into your time t. So t is equals to your x of your AB divided by velocity of your AB. X of your AB is 200, velocity is 25. So कितना आ रहा? 8 seconds. 8 seconds will be your answer. Clear है सभी को? Yes, sir. आ Yes, गया? पक्का? जी सर. ठीक है, चलो अब एक प्रीवियस नीट का क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोगों को करना है बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया. सो दिस इज अ प्रीवियस व्हाट यू कॉल दैट नीट क्वेश्चन. सो ट्राई टू सी इट एंड ट्राई टू डू इट आउट ऑन योर ओन. सो सी द क्वेश्चन राइट नाउ. वी गॉट ए ट्रेन ऑफ योर 150 मीटर. आतिफ 150 मीटर लेंथ, ग्लास यहाँ पर, length is going, a train of 150 meter length is going towards north, is going towards north. It is speed of 10 meter per second. First stop. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards the south. Okay, towards the south, parallel to the railway track.
parallel to the railway track. The time taken by the parrot, to cross the train is, okay, options I'm giving you: 7 seconds, second option is 8 seconds, third option is 9 seconds, and fourth option is 10 seconds. 10 seconds. आ गया? Ditto like a previous question which I did you, isn't it? Yes, sir. टू ट्रेन्स की जगह क्या दे दिया इसने यहाँ पर? अपने पास एक ट्रेन है, and this train is moving in this direction. So this is the velocity of train with respect to the ground. Velocity of the train with respect to ground कितना है? A train of जी। 150 meter length is going towards the north. It is रखो speed of निकाल 10 के। meter per second. क्या है ये? Okay, velocity of train with respect to your ground कितनी है बेटा? Velocity of train with respect to ground is given as of your 10 meter per second basically, isn't it? मैं मान के चल रहा हूं कि ये नॉर्थ है और ये डायरेक्शन मेरा साउथ है, अजम्पशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रेन मेरे को फिर अब नॉर्थ में ऐसे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगी ना, इसलिए मैं इस तरह से नॉर्थ और इसको साउथ मान के चल रहा हूं बेसिकली. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी ऑफ पैरेट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है. सो वेलोसिटी ऑफ योर पैरेट, ये मान के चलो पैरेट है. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पैरेट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड जा रहा है ना वो, तो सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द पैरेट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये कितना है बेसिकली? -5, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. और ये पूरी लेंथ कितनी है? 150 मीटर से, ये पूरी 150 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है. So you know that velocity of the parrot with respect to train is equals to velocity of parrot with respect to ground minus velocity of train with respect to the ground. Okay, velocity of the parrot with respect to ground is how much for me? -5, minus velocity of train with the ground with respect to ground is how much? 10. So velocity of the parrot with respect to train is minus of your minus, that will become for me plus. So that will become how much for me beta? Minus 15 meter per second. That means velocity of the parrot with respect to the train is in the negative direction. That means in the south direction, isn't? So I'm using the same position of your A with respect to the B. यानी मान के चलो x coordinate of your train with respect to the parrot कितना है मेरे पास? -150 meter, because it is moving in opposite direction. So time taken will be equal to how much for me? -150 divided by velocity, that is nothing but 15. ये चलेगा, that is nothing but 10. So this will be equal to how much for me? 10 seconds. Time can't be in negative. That is the reason I'm directly taking it as of your 10 seconds. This will be your answer. Clear as a big go? Yes, sir. Yes, sir. वन डायमेंशन क्वेश्चंस आगे ना करने के लिए क्लैरिटी है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन भी आप ही लोग ट्राई करके बताओ, उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन चले आता. ये भी प्रीवियस नीट क्वेश्चन है बेटा. ए बस is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. First off, a scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. First off, if the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus?
चलो try to do it everyone. First option is 40 meter per second. Second option is 25 meter per second. Third option is 10 meter per second. And fourth option is 20 meter per second. चलो ट्राई करो सभी लोग. सेम जो प्रीवियस फॉर्मूलास लगाया वही लगाना. डायग्राम ड्रॉ कर लो. A bus is moving with a speed of 10 meter per second. ये हो गए मेरे पास ये बस. And this bus is moving. ये B है बस. Velocity of respect to ground कितना दे रखा है बेटा? 10 meter per second. Okay. As on a straight road, scooterist wishes to overtake the bus. यहाँ पर कहीं पर आपकी स्कूटरिस्ट है. यहाँ पर कहीं पर अपनी स्कूटरिस्ट है. यहाँ पर अपने पास कहीं पर अपनी स्कूटरिस्ट है. ठीक है. एंड दिस इज मूविंग. इन दोनों के बीच में सम डिस्टेंस है. स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड्स. टाइम दे रखा है. इसको पूरा ओवरटेक करेगा. इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, यानी इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर. यानी कितनी मीटर्स हो जाएगी? 1000 मीटर्स. ठीक है ना. एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर स्कूटरिस्ट विद रेस्पेक्ट टू योर ग्राउंड. ये मुझे पता नहीं है, मान के चलो ये v है. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1000. सो आई कैन राइट हियर velocity of the scooter with respect to the bus is equals to velocity of scooter with respect to ground minus velocity of bus with respect to your ground. So velocity of scooter with respect to ground कितना है बेटा? v. So this one is nothing but of your v. Bus is also moving in the front direction, that is nothing but of your 10. So this is the velocity of the scooter with respect to your bus. कितना? v minus of your 10. Then relative distance between them is how much for me? Distance of this one is how much for me? Or x लिख लेता हूँ basically. So your x of your scooter is with respect to your bus. एक खोलो यहाँ बैठो, थोड़ा सा खोलो. That is equals to how much बेटा? 1000. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? 1000. So टाइम कैसे निकालोगे? टाइम t is equals to your distance between them divided by your velocity of the scooter with respect to the bus. So that is equals to your 1000 divided by this one is how much for me? v minus 10. टाइम देखा है प्रॉब्लम में 100 seconds. This is 100 is equals to this one is 1000 divided by v minus 10. ये those two zeros, ये two zeros has been gone. v minus 10 is equals to your 10. ये minus 10 इधर चले जाएगा तो v is equals to how much बेटा? 20 meter per second. So this is your 20 meter per second your answer. So this must be your answer. देख लो फिर से एक बार. सेम क्वेश्चन सेम मेथड है, मेथड कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. Is that clear? Yes, sir. There is no change in your what do you call that one velocities. 1D dimension में ले रहा हूँ everything. Clear है? Yes, sir. चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. अभी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ योर मोशंस बेटा, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2s के कंडीशंस में लेके कर लेंगे. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. से फॉर एग्जांपल a man is
25 meter behind a bus. Stop. When bus starts accelerating, and bus starts accelerating at 2 meter per second square, 2 meter per second square, and man starts moving with constant velocity of 10 meter per second, time taken by him to board the bus is, first option is 2 seconds, second option is 3 seconds, third option is 4 seconds, fourth option is 5 seconds. Chalo try kar. First write the data whatever he has given, then you approach it. A man is 25 meter behind a bus. When the bus starts accelerating at 2 meter per second and man starts moving with a constant velocity 10 meter per second. Time taken by him to board the bus will be equal to how much? Same previous condition के सरकार लिखना अपने को. Diagram draw कर लो. मान के चलो अपने पास ये बस है. This bus is moving in the front direction. So this is your bus. So this one is velocity of bus with respect to the ground is equals to how much for me beta? 0, because constant जा रही है ना. Acceleration दे रखा है. Acceleration of this body is moving in the front direction. So acceleration of your bus with respect to ground is equals to how much for me? 2 meter per second square. Okay. Now the man is 25 meters. Somewhere here is your man. So this is your position of your man. This distance right now from him is how much? 25 meter. So everything is given in meters. A man is 25 meters behind the bus. When the bus starts accelerating at 2 meter per second, man starts moving at a constant velocity of your 10 meter per second. That means velocity of the man with respect to the ground is equals to 10 meter per second. Clear? Sure. Apply the concept right now. Velocity of the man with respect to your bus, because man is moving with respect to bus only, na? This is your man. So this is the velocity of man with respect to ground minus velocity of bus with respect to your ground. Velocity of man with respect to ground कितना है बेटा? 10 है, minus velocity of bus with respect to ground नहीं दिया, 0. So this will be equal to 10 meter per second. Velocity of man with respect to bus is equals to 10 meter per second. The same way, acceleration of the man with respect to the bus is equals to acceleration of man with respect to ground minus acceleration of bus with respect to your ground. Okay, so acceleration of man with respect to ground is how much? 0 minus acceleration of the bus with respect to the ground is how much for me? 2. So this will become for me minus 2 meter per second square. अच्छी तरह से देखो बेटा, acceleration of man with respect to the ground, acceleration of man with respect to ground. See, acceleration of man with respect to ground minus acceleration of bus with respect to the ground. Man is moving with uniform velocity, so acceleration will be 0. Bus is accelerating, so it is minus 2. So it is minus 2 meter per second square. Distance between them, distance of your man with respect to your bus is equals to how much for me? 25 meters. Clear? Then I can use the equation right now here. Which equation I can use better, and which distance and time is also present? S is equals to ut plus half of your at square. Second kinematic equation. Distance between them is 25. Initial velocity is nothing but 10 into time t plus this one is half. Acceleration, how much we got right now, beta? This one is acceleration of man with respect to. This one is acceleration of man with respect to your bus. So that is how much for me? Minus 2 into your t square. This one will get cancelled. So 25 is equals to 10 into t minus of your t square. So this will become for me t square minus of your 10t plus of your 25 is equals to 0. Okay.
So this can be written as of your how much beta? T minus of your 5 whole square must be equal to 0. So T will be equal to how much for me? 5 seconds. आया सभी को? Yeah, you can use directly the kinematic quadratic equation also. आ गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देख लो आराम से, टेंशन लेने का नहीं. अब यहाँ से आपका लेवल बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का. रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन ग्रेविटी के बाद में करेंगे. सिर्फ हम लोग फिलहाल स्ट्रेट लाइन का मोशन ही कर रहे हैं बेसिकली. क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So we have done with the introduction of your relative velocity बेटा. बहुत बेसिक से करवा दिया. जो क्वेश्चंस मैं कराया उसी को आप लोग 102 बार करो. And don't try to unnecessarily go for any higher level of your problems right now. पहले जो बेसिक्स हो रहा है उस बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो. If I feel that your level is increasing, then I'll tell you कि the higher level of your questions which you can able to do. But पहले बेसिक क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं, जो नीट लेवल के आते हैं, उसको पहले परफेक्ट बना दो. उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर अपने पास टाइम मिला तो थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस और घट क्वेश्चंस के लिए करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए जितना भी नीट के लिए नॉलेज जरूरी है और जितना नीट का लेवल क्वेश्चंस है उतना ही लेवल पे आप लोग कंसंट्रेशन करो फिलहाल. ठीक है ना? और मैक्सिमम sir. मॉडल्स 1D के Okay, मैक्सिमम sir. करा दिया. इसको एक क्वेश्चंस को फ्रेमिंग आप लोग को समझना है 1 से 2 बार और प्रैक्टिस करना. अब ऐसा मत समझो सर बहुत इजी है मेरे को आता ऑलरेडी. हाँ इजी है, जब पढ़ाते रहते हो ना जब आराम से अच्छा लगेगा. जब रिलेटिव वेलोसिटी के मोशन के खाली प्रॉब्लम्स लेके करना शुरू करोगे ना विदाउट द हेल्प ऑफ ए टीचर, देन यू विल फील डिफिकल्टी. वो डिफिकल्टी नहीं आना बोले तो जो भी मैंने प्रॉब्लम्स 1 से 2 बार कराया उसको अच्छी तरह से समझो. Try to understand the terminology of a questions, close the book and try to take the data and try to do it once and twice. And I'll give you the good assignments also on this one and try to do the assignments which I will be sending you. Then you go for the remaining material. अगर हुआ तो बेसिकली आज रिलेटिव वेलोसिटी मोशन का बेसिक यू ट्राई टू स्टडी इट फ्रॉम योर मटेरियल. जो भी मटेरियल आपके पास है चैतन्य का जेरोक्स करा लो बोल के बोला था वो निकाल के एक बार जरा आप लोग कर लिए तो दैट विल बी हेल्पफुल. ठीक है? Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. इसमें कुछ डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो. आई विल हेल्प यू आउट बेटा. नहीं है तो फिर आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं है सर. पक्का? Yes, sir. नहीं है. चलो फिर. ग्राफ्स एक बार रिवाइज कर लो बेटा. आज आप लोग जो स्टार्टिंग में मैं बेसिक मैथमेटिक्स ग्राफ कराया था यू प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दैट ग्राफ बेटे. क्लियर है? चलो Okay, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा. मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. Okay, see this is an example for uniform acceleration beta. This is an example of uniform acceleration. Uniform acceleration. Motion under gravity is the best example for what? Uniform acceleration. और एक ही जो वैल्यू होती है that we take it as of a g. We take it in two forms beta.
Either you take it as 9.8 meter per second square, or generally we can also take it as of your 10 meter per second square. Depend upon the problem data. अगर data में कुछ भी नहीं दिया, then we need to take 9.8. Otherwise, we need to take the 10 if he is giving specifically. Otherwise, you can for the easy calculation हम लोग 10 लेके भी चल सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है basically. ठीक है? For uniform acceleration, we know that V is equals to U plus AT. Second kinematic equation, S is equals to UT plus half of your AT square. Third equation is V square minus U square is equals to your 2A into your S. ठीक है ना? So this was the for uniform motion. अब इसके अंदर हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, which is very important for us. साइन कन्वेंशन, मोशन एंड ग्रेविटी का साइन कन्वेंशन. अगर ये क्लैरिटी है तो बाकी का पूरा कॉन्सेप्ट अपने पास क्लैरिटी रह जाएगा बेटा. फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं when the object is moving upwards, point number A, the velocity is positive. Okay. Number B, A will be equal to minus G, acceleration due to gravity, and displacement will be equal to positive or negative beta. Displacement will be equal to your positive, क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है ना, so that will be taken as of your positive part of relation. Is the point clear for everyone? When object Yes, is sir. moving which direction beta? Upward direction, yani from the surface of the earth. If you are throwing an object in the upward direction, so upward direction का velocity positive होगा. Acceleration is right now for this one, A is equals to minus G होगा, and S will be equal to your positive. The same way, when the object is moving downwards, when the object is moving in the downwards direction, then इसके लिए भी first point लिखो, the velocity is taken as negative. The velocity is equals to your negative. Number B, A will be equal to, क्या होगा बताओ? Minus G. A is also equal to minus G. क्यों? क्योंकि ये जो जहां से आप फेंक रहे हो basically that will be the reference. Below reference we take it as of your negative. And number C, S will also be what for me? Negative. देखो यहाँ पर कैसा, अच्छी तरह से समझो. ये हो गया मेरा ग्राउंड बेटा, ठीक है? आप बॉडी फेंक रहे हो यहाँ कहीं पर से. अब ये हो गया मेरा रेफरेंस, ये रेफरेंस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, ये रेफरेंस से नीचे आओगे तो नेगेटिव. ठीक है ना? तो ये रेफरेंस से क्या हो रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जनरली बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं. ठीक है? ये रेफरेंस अगर हम लोग ले रहे हो, अबव द रेफरेंस पॉजिटिव, बिलो द रेफरेंस नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? देखो एक बार जल्दी से, जल्दी. कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर. पक्का? इसके लिए ये रेफरेंस है बेटा, रेफरेंस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जा रहा है बेसिकली नेगेटिव, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पर भी बोलोगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है, तो ये भी आप पॉजिटिव ले लो. तो ये अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो रेफरेंस कहाँ पर आना चाहिए? ग्राउंड आना चाहिए. तो ये रेफरेंस जो है ना, ये रेफरेंस से अगर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे आ रहे हो तो दैट विल बी टेकन एज ऑफ योर नेगेटिव. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes sir. पक्का? Yes, sir. एक एप्लीकेशन देता हूँ ये आप साइन कन्वेंशन समझने के लिए. मान के चलो ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, a body is thrown vertically upward with speed u. Find number 1 time taken
by it, time taken by it to reach maximum height. To reach maximum height. Number 2, maximum height. And number 3, time taken to reach initial position. To reach your initial position. ठीक है? So this is the given condition. So ground reference बना लो. ये अपना ground है. Body is thrown. ये हो गया अपनी body is thrown vertically upwards. Here it is being thrown vertically upwards with a speed of your how much u. So u is equals to positive, and it goes right now here, and this is your maximum position. At maximum position, final velocity is how much for me? 0. So यहाँ से यहाँ तक ये जो जा रहा है, so this one is your maximum height. Maximum height, and a will be equal to how much? Better, can anyone tell me? A is equals to minus g. Minus g. So now we use the kinematic equation. First one. If I'm using v is equals to u plus of your at, final velocity is 0, u is positive, a is equals to minus g into t. तो यहाँ से आ गया u is equals to g into t. So t is equals to how much I got? U by g. So time taken to go up will be equal to how much for me, beta? U by g particle ratio. Clear है सभी को? Sign convention समझना. Formula तो हम लोग को बहुत ज्यादा आता है. We know the formula from the very time because we are reading it twice and thrice basically. तो maximum height मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, तो ये है मान के चलो plus h, isn't it? तो कौन सा equation ले लो मैं? v square minus u square is equals to 2a into your s. Again final velocity is 0. This one is u, that is equals to e2. Acceleration is minus g, and this one is nothing but of your h. तो ये हो गया u square is equals to 2g into your h. तो ये हो गया h is equals to u square by 2g. So this is the maximum height formula right now. Sign convention clear है सभी को? Yes, sir. Now next one क्या है? Time taken to reach the initial position, यानी ऊपर जाके नीचे आने के लिए. So time taken will be equal to how much, beta? So total time will be equal to your total time will be equal to 2t. So that is equals to 2. T is equals to how much for me? U by g. So this is your time of your flight. इसको time of flight भी बोलते हैं. So t is equals to your 2u by your g. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. Question करो. Let me see how far you understood this application based upon the same knowledge what you have taken. Say for example, a stone is dropped. A stone is dropped from a tower. From a tower of height 20 meter. Find number A. Time taken to reach ground. Time taken to reach ground. And number B. Speed just before hitting ground. Just before hitting ground. चलो जल्दी से बताओ. Draw the diagram as per your understanding, then you try to do it out. Time is 2 seconds. 12 seconds. Time कितना आ रहा? 2 seconds. 2 seconds. sir. पक्का? और velocity? Yes, sir. ओके देखते हैं. ये हो गया मेरा टावर. यहाँ से एक बॉडी हम लोग ने नीचे फेंका. तो when I dropped means initial velocity is how much? 0. This height is how much for me? 20 meters. Sign convention समझ लो बेटा. And it is been coming down and hits the ground here with a velocity of say मान के चलो v. So acceleration क्या हो जाएगा? Minus of your g. Minus g. U value कितनी है मेरे पास? 0. 0. U value is 0. equals to 0. Displacement कितना है? Minus 20. Minus 20. Time t is equals to how much? I can use the kinematic equation S is equals to ut plus half of your a into t square.
तो यहाँ पर हो गया एक कितना -20 इज इक्वल टू equals इनिशियल वेलोसिटी 0 into t, ये हो गया प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -10 into your into t square. So -20 is equals to 2 1s are 2 5s are, तो ये हो गया -5 into your t square. 5 1s are 5 4s are, माइनस माइनस भी चले जाएगा, t square is equals to your 4, तो t हो गया कितना 2 seconds. आया सभी को? yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछा? स्पीड Velocity. जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विथ व्हाट स्पीड इट -20 इज आ रही हिटिंग, सर, कितना? -20 आ रही सर. V equals U -20, very good. V is equals to u plus of your 80. So U this minus is v, u is minus 0. This one is a, acceleration is minus g into your time t, isn't it? So ये हो गया -10 into time is nothing but 2. So it is -20 meter per second. ये हो गया velocity. आया सभी को? आया सर। Yes sir. समझ में आया साइन कन्वेंशन? Yes, आया sir. एंड डोंट बी हरी बड़ी, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है कि सर छोटा है हम लोग को आता बोल के एक्साइट होने की जरूरत नहीं है. आपको बेसिक से कराया जा रहा है. ओनली रीजन इज आपका साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाए. कल जब प्रॉब्लम का लेवल बढ़ते जाए तो आप लोग कंफ्यूजन होना नहीं है. इस समझ में आ रहा? तो डोंट बी इन ए हाइपर मोड कि चलो भाई मेरे को आ रहा बोल के वो मोड में अभी मत रहो, बिकॉज ये सिर्फ आपका साइन कन्वेंशन के लिए, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं मैं बेसिकली. ठीक है ना? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कर लो, देन विल कीप द फुल स्टॉप फॉर टुडे सेशन. एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, देख लो बेटा. फॉर एग्जांपल सी, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected vertically upwards from a tower of height 20 meter. It is speed of 5 meter per second. First of all, find number 1 maximum height reached by ball, okay, from ground beta. We need it from your ground. Okay, second question इसके अंदर, time when it passes from its mean position. Okay, time when it passes through its mean position part of relation. mean position मतलब क्या बेटा? Where from it is project. mean position means again coming back to the same position. ठीक है? Yes, sir. ओके एक क्वेश्चन आप लोग करो और नोट्स अच्छी तरह से पढ़ो 102 बार, और उसके अलावा आप 1D डायमेंशन चैतन्य के मेटल निकाल के एक बार कर लो, और मोशन इन ग्रेविटी भी चैतन्य में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है बेटा. वो पूरे एप्लीकेशंस, अगर ये कहानी समझ में आ गई तो वो एप्लीकेशंस पूरे आराम से आ जाते. यू नीड नॉट रिमेंबर और बट्टीफाई दैट ऑल एप्लीकेशंस देयर, सिर्फ कंडीशन ले जा सकते हो बेसिकली एंड सी द साइन कन्वेंशन एंड गो ऑन गेट द आंसर्स बेसिकली. ठीक है ना? तो इतना बेसिक आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो. We'll try to go for the advanced level of this one from the Monday session of your class. Sir. ठीक है बेटा? Sir. हाँ बोलो बेटा. Sir, ये पोर्शन कहाँ तक है सर नेक्स्ट वीक के लिए? एग्जाम के लिए? Yes, sir. एग्जाम के लिए मैं मंडे बोलता था तुम बोला. Okay, sir. एग्जाम कब रख रहे हैं आपको? सर शायद संडे है सर, नेक्स्ट संडे रहेगा सर शायद. हाँ नेक्स्ट संडे बोलो तो मंडे बोल देता हूँ मैं बेसिकली. ओके. और सर आप कैंपस को भी आइए सर, डाउट्स रहते तो इसलिए. बेटा मेरे को टाइम मिला तो जरूर आता हूँ मैं. ऐसा कंडीशन है कि आज मैं गाँव में हूँ फिलहाल, तो आई मीन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ. फंक्शन चल रहा है घर में, मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ फिर भी. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you very much, Thank you sir. very much, sir. I'm almost like 200 kilometers away. Everyone is enjoying there in the function. You don't believe me, I am in the classes from morning. सिर्फ खाना जाके खाना खा के आया. मेरे भतीजों का वो कांची दाई की जो फंक्शन होती है ना, वो फंक्शन में हूँ मैं बेसिकली. Everyone is there. I am taking the classes for all of you.
आपको आप ही को ना सभी को लेना पड़ रहा मेरे को, एक प्रॉब्लम है बेसिकली. इफ आई गेट द टाइम श्योरली आई विल कम बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट वन. वीक में एक दिन तो भी आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा. ठीक है? Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir. ओके. Thank you, sir. Thank you, sir. Love you.